गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर लाइव सेशन जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने फोरेंसिक के एमसीक्यू क्वेश्चंस। जी हां, एंड टुडेज सेशन इज टाइटल्ड एज स्पेशल एमसीक्यू क्लास नंबर 10. ओके, so I welcome you all from my heart, where today we will be talking about the questions in forensic medicine from the topic of thermal injuries. Yes, and आज वापस से हम मिल रहे हैं अपने normal stipulated time पे, which is 7 p.m. So we've been having this fabulous journey for almost last 1 month, where we are by we I mean you and me. Okay, we are live at this YouTube portal supported by Unacademy to discuss questions or progress with lectures of variety of topics of the subject of forensic medicine. और हमारा एम है नीट पीजी 2021. इस पूरे टॉपिक, इस पूरे डिस्कशन का एक ही गोल है, दैट इज टू एम्पावर एंड energize the students towards preparing for their NEET PG 2021 entrance examination in the subject of forensic medicine. And by the way, सिर्फ subject of forensic medicine ही एक important subject नहीं है, बाकी subjects भी NEET PG में important हैं. forensic medicine को छोड़ के we have 18 more subjects जो हमें प्रिपेयर करने पड़ते हैं टुवर्ड्स आवर एंट्रेंस एग्जामिनेशन. एंड Unacademy वी आर डेडिकेटेड टू गिव यू ऑल ऑफ देम, सो दैट जिस दिन आप अपने एग्जामिनेशन रूम में बैठे हुए हो टुवर्ड्स सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ नीट पीजी, आपको ये कॉन्फिडेंस रहे दैट यू हैव प्रिपेयर्ड थ्रू Unacademy पोर्टल एंड यू आर कॉन्फिडेंट टू क्रैक दैट एग्जामिनेशन. ठीक है, सो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ फॉर दो स्टूडेंट्स जो हम इस लेक्चर को नए स्टूडेंट्स बन के देखेंगे. माई नेम इज़ डॉक्टर सुमित तेलेवार एंड आई एम एसोसिएटेड विद teaching of forensic medicine for last more than 15 years. I happen to be a graduate from Delhi University. कुछ important achievements अगर आप उसे कहें तो आपको बोर्ड पे दिख रही हैं, बट मैं उसको important achievement नहीं कहूँगा. मेरे लिए important achievement ये है कि आज yet another session where I am sitting and discussing my experience towards helping all the MBBS PG entrance examine aspirants to let them learn, to let them new goals in yet another topic of forensic medicine. ठीक है, अच्छा एक बात देखिएगा कि जब भी कोई टीचर और स्टूडेंट इंटरेक्शन होता है, हाई चांसेस कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होने की उम्मीद होती है कि स्टूडेंट को रिटेन ना रहे या स्टूडेंट को उस इंटरेक्टिव सेशन के समय पे याद ना आए या समझ ना आए, एंड दैट बिकम्स अ क्वेरी, अ क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट. एंड अगर आपको कभी भी ऐसी किसी क्वेरी या क्वेश्चन का सामना करना पड़े एंड यू वांट मी टू एड्रेस दैट क्वेरी फॉर यू, काइंडली कॉन्टैक्ट मी एट टेलीग्राम ऐप. आपको बहुत सिंपल सी एक चीज़ करनी है, यू नीड टू डाउनलोड टेलीग्राम ऐप इन योर फोन्स, और for that matter any other handheld device, and you need to type livedaily.me/neetpg. This link will get you in contact with me, where you can drop your queries and we can solve it for you. Okay, अच्छा अभी मैंने आपके साथ में ये बताया that at Unacademy we are dedicated to provide you all the information, all the knowledge that is necessary, कि जिस दिन आप एग्जामिनेशन में बैठे हुए हो उस दिन you are not facing even a slightest doubt of non-confidence. तो वो कैसे होने वाला है? तो वो ऐसे होने वाला है कि when you are someone that has taken up
Unacademy as the portal where you are a student preparing for NEET PG entrance examination. You get specialized live classes by experienced wonderful teachers. These classes are equipped with kind of technology that they give you a special classroom kind of a feel where you are interacting with your educator all the time. आपको कभी ऐसा महसूस ही नहीं होता है कि आप क्लासरूम से बाहर चले गए हो, और उस फील को एनहेंस करने के लिए देयर इज अ स्पेशल फीचर कॉल्ड एज लाइव पोल्स. ओके, these are special features when a examiner provides you with a MCQ and he asks you to solve those MCQ live. Now solving those MCQ live gives you an extra edge towards gaining that little bit of confidence every time. By the way, जो आपके पास आपके हार्ड ड्राइव में स्टोर हो जाता है, ताकि जिस दिन आप एग्जामिनेशन में अपने बैठो, यानी कि नीट पीजी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आप बैठो, आपके पास में वो एक्स्ट्रा एज ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने ये क्वेश्चंस लाइव अटेम्प्ट करे हैं, एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बूस्ट दैट यू डोंट वांट टू मिस. उसके लिए आपको नीट पीजी के अनअकैडमी के सब्सक्राइब्ड सेक्शन में आना पड़ेगा, जहां पर आपके लिए हैं स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, आपके लिए हैं बैच वाइज शेड्यूल, आपके लिए लॉन्च किए जाते हैं हर सब्जेक्ट में विद एक्सपीरियंस टीचर, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लर्निंग लेसन्स एंड कोर्सेज, एंड यू हैव चॉइस कि आप अपनी प्रिपरेशन के लिए किस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करना चाहते हो. ठीक है, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस भी अपने पोर्टल पे होते हैं, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से स्टूडेंट को कोई भी डाउट जो किसी भी सब्जेक्ट के बारे में रह गया हो वो सॉल्व करने का मौका मिलता है, एंड दैट टू लाइव, एब्सोल्युटली लाइव. ठीक है, ये सारी चीजें ना किसी और वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म पे लाइव क्लासेस में नहीं मिलती. सो ये जो एक्सपीरियंस है ना, टू गो लाइव ऑल द टाइम, सो दैट ईच स्टूडेंट हैज अ फील दैट ही और शी is in a classroom bounded by four walls with their educator, gives that personal touch to every preparing student. और ये सब देखने के लिए ना आपके पास है स्पेशल क्लासेस जो कि अनअकैडमी के ऐप पे एब्सोल्युटली फ्री हैं. These special classes are designed by teachers just like me in every subject. आप वो स्पेशल क्लासेस देखो, they will give you the exact feel of what it feels like to be in Unacademy NEET PG plus segment. Plus segment वो segment है जहां पर आप subscription NEET PG का buy करते हो towards being an Unacademy student, towards preparing your NEET PG entrance examination. Plus subscription buy करने के मौके हैं आपके पास for 12 months and 24 months, because ये आते हैं बल्क डिस्काउंट में. गो फॉर देम. बाय करते समय यू नीड टू टेक केयर दैट यू नीड टू यूज माय रेफरल कोड विच इज डॉक्टर सुमित लाइव टू अवेल एन एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन द पेमेंट दैट यू मेक, एंड देन you are ready to go and enter into your personal batch where your preparation towards cracking NEET PG 2021 begins. ओके, ये सारा काम एज सुन एज पॉसिबल कर लेना है. ठीक है, आज के लिए हम आगे बढ़ते हैं एंड विल टेक अप आवर क्लास ऑन द हैंड. एज यू कैन सी, आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मल इंजरीज के MCQs. अनदर इम्पॉर्टेंट एरिया व्हेन वी टॉक अबाउट फोरेंसिक पैथोलॉजी. ओके, टाइम एंड अगेन मैं अपने लेक्चर्स में कहता हुआ आ रहा हूँ दैट in an average NEET PG examination we are expecting about 300 questions in total. Out of that तकरीबन 10 questions आएंगे forensic medicine में से, और उन 10 questions में से at least 2 questions होंगे from the area of core injuries, that is from mechanical injuries, medico-legal aspect of the wound, and we are again expecting at least 1 question
from the combination of thermal injuries and forensic ballistics. So हम अगर इंजरी के वर्ल्ड की पूरी बात करें, which includes mechanical injuries, medico-legal aspect of wound, regional injuries, road traffic accident, thermal injuries and forensic ballistics, तो हम तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं. ओके, ये सारे ही टॉपिक हम अपने लेक्चर में पहले कवर कर चुके हैं और आज बारी है थर्मल इंजरीज के MCQ की. ओके, सो आगे जाने से पहले अपने जो स्टूडेंट्स हैं विच आर ऑलरेडी विद अस उनको हेलो कर लेते हैं. सो हमारे पास में ऑलरेडी अवेलेबल है डैन. हाय डैन. सुष्मिता हैज जॉइंड अस. वी हैव Jayesh coming with us, and so has Vishwas joined us. And great, all four of you, welcome to the class. And with that, let's begin with our question number 1. And our question number 1 is, there is a 70-year-old patient who presents with disorientation and drowsiness and low body temperature. The correct statement is, okay. तो क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इन्फॉर्मेशन इतनी दी हुई है. द एज इज 70 एंड ही प्रेजेंट्स विद डिसओरिएंटेशन एंड ड्राउजीनेस एंड द बॉडी टेम्परेचर्स आर लो. ओके, द ऑप्शंस आर, ही इज सफरिंग फ्रॉम हीट स्ट्रोक, बी इट्स अ केस ऑफ मॉडरेट हाइपोथर्मिया, और सी इट्स अ केस ऑफ माइल्ड हाइपोथर्मिया, और डी इट्स अ केस ऑफ इलेक्ट्रोक्यूशन. ओके, तो एक बार ही देखते हैं आप में से कौन ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहता है. सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 10 seconds. इफ एनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर विद अस आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड send your answers at the YouTube chat box. Okay, so it has been attempted by Sushmita, Vishwas and Dan, all coming up with the same and the correct answer, that it is a situation of मॉडरेट हाइपोथर्मिया. आपको याद है हमने जब अपनी लेक्चर्स की बात करी थी, जब हम हाइपोथर्मिया की बात कर रहे थे, आई शोन यू अ टेबल वेयर आई हैव टोल्ड यू दैट हाइपोथर्मिया कैन बी broken down into 4 segments. One is mild, then moderate, then severe and profound. Mild is when the temperatures are below 36 degrees but up to 32. Then moderate from 30, it will be like this, 36 to 32. Then 32 to 28 is moderate. Then 20 to 28 is severe, and less than 20 degrees centigrade will be profound hypothermia. And how do patients present in various categories? Mild hypothermia has the most important symptom of hypothermia, that is shivering. And the patient is oriented, so he is well oriented. There is no loss of any of the mental faculties, but one of the predominant symptoms that they show is shivering. As the temperature drops down below 32 degrees, the shivering stops. Shivering stops below 32 degrees and the person becomes drowsy. So moderate hypothermia में सबसे पहली बार हम loss of mental orientation को observe करते हैं, along with a very critical feature that shivering has stopped. सिवियर केसेस में शिवरिंग तो ऑलरेडी रुक चुकी है माइल्ड मॉडरेट हाइपोथर्मिया में, बट उसका जो ओरिएंटेशन है it goes from drowsiness to coma. And in cases of profound hypothermia, there is complete loss
और एब्सेंस ऑफ वाइटल्स। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ क्लिनिकल प्रेजेंटिंग फीचर्स हैं जो हाइपोथर्मिया के पेशेंट डिपेंडिंग अपॉन किस रेंज ऑफ हाइपोथर्मिया में है दे प्रेजेंट व्हेन दे कम टू द हॉस्पिटल इमरजेंसी। सो क्वेश्चन जो था उसमें देयर इज अ 70-year-old पर्सन हु हैज प्रेजेंटेड विद ड्राउजीनेस, जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वहाँ नोट करने का, और शिवरिंग कहीं मेंशन्ड नहीं थी। सो he was showing up what we say is in the moderate range of hypothermia। ठीक है, आगे चलते हैं। Let's see up question number 2। Question number 2 is there is a dead body which has been found in winter season and the dead body is of a roadside destitute. An important autopsy feature that will suggest of hypothermic death in this case will be, okay, let's see what would be the answer here. The options are distended gallbladder or alopecia, Wisniewski's lesions or perirenal fat necrosis. And again I'm inviting all our students to participate and come up with the answer, waiting for 10 seconds and then we will go further. So Vishwas has answered as option number C. Anybody else? So has Sushmita, I can see, and hopefully Dan will come up as I said with option number C, and that's absolutely correct. याद रखिएगा ये एक स्पेशल प्रेजेंटेशन है जिसके लिए एक स्पेशल नाम दिया हुआ है, इसीलिए MCQ के कॉन्टेक्स्ट में विश्न्यूस्कीज लीजन एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। ठीक है, व्हाट आर विश्न्यूस्कीज लीजन्स? विश्न्यूस्कीज लीजन्स आर ब्राउन कलर पिनहेड size, hemorrhagic spots, found in gastric mucosa of hypothermic deaths. The mechanism of this development has always been controversial. बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी theory suggest करी है. None of them has been accepted with with a lot of trust, but it has been seen that if we do conduct autopsy in lots and lots of cases where hypothermic deaths has happened, if we do see their gastric mucosa, there are development of numerous brown color spots like this, which are called as Wisniewski's lesions. Okay, apart from this, another very important autopsy feature which is also very closely associated with lots and lots of hypothermic deaths is pancreatic fat necrosis of variable degree. Okay, another important autopsy finding which is seen in hypothermic deaths is variable degree of pancreatic fat necrosis. बहुत कम केसेस में देखने को मिलती हैं, क्योंकि जिन केसेस में pancreatic fat necrosis मिल सकती है like metabolic syndromes, could be alcoholism or death due to pancreatitis or hemorrhagic pancreatitis, जनरली उन केसेस में ऑटोप्सी वारंटेड नहीं होती। ओके, ज़रूरत नहीं पड़ती है ऑटोप्सी करने की।
बिकॉज उनके पास में डॉक्यूमेंटेड मेडिकल कॉज ऑफ डेथ होता है, एंड दैट इज वाई दिस finding becomes very significant when we do find it in a person who is alleged to have died of hypothermia. ठीक है, तो ये दो important autopsy findings याद रखेंगे when we talk about hypothermic deaths. आगे चलते हैं. Let's take up our question number 3, and this question is complete involvement of dermis in flame burns is which degree burn in Dupuytren's classification? Okay, so this question is basically targeting Dupuytren's classification. The question is simply saying that if there is a flame burn and it is involving the dermis completely, then which degree burn it would be called as? Options are first degree, second degree, third degree, or fourth degree Dupuytren's. Let's see what your answers are. So again, waiting up for all of you to just come up with the answer. Is it first, second, third, or fourth degree Dupuytren's? Okay, so Vishwas has come up, and Dan has come up, and Sushmita has come up. All three of them has come up with the correct answer that this is fourth degree Dupuytren's. Okay, remember हमने अपने lecture में बात की थी that when we talk about Dupuytren's classification, then Dupuytren's divided his burns as per the depth of the body tissues at those are involved into 6 degrees: first degree, second degree, third degree, fourth degree, fifth degree, and sixth degree. First degree is epidermal burns only. Second degree is epidermal but along with blister formation. Then third degree is dermal penetration but not full thickness. Then fourth degree is full thickness dermis involvement. Fifth is involvement of muscles and subcutaneous tissue, and sixth is when the core of the body is reached, that is when the burn has penetrated to the depth of the bone. Okay, बड़ी important classification है Dupuytren's की, which is giving about the depth of the burn. Similarly, आपको याद होगा we talked about another classification being given by Wilson. विल्सन की क्लासिफिकेशन भी डेप्थ इन की क्लासिफिकेशन को इन्वॉल्व करती है, यानी कि कितना डीप जला है बर्न, उसी के हिसाब से विल्सन क्लासिफिकेशन है, विच इन्वॉल्व्स 3 डिफरेंट एरियाज और जोन्स आप कह सकते हो. द फर्स्ट वन इज एपिडर्मल ओनली, इसको सुपरफिशियल भी कहते हैं. ठीक है, एंड विल्सन ने बोला दैट वॉट एवर इज एपिडर्मल बर्न्स एज पर हिज क्लासिफिकेशन they are the first and the second degree of Dupuytren's. Then second is dermo epidermal by Wilson, which involved all the burns which were third degree and fourth degree or up to third and fourth degree of Dupuytren's, and whatever was fifth and sixth degrees of Dupuytren's were classified as deep by Wilson. So Wilson की 3 कैटेगरीज क्या हैं? सुपरफिशियल, डर्मो एपिडर्मल, डीप.
ल्यूकोट्रायंस की कितनी कैटेगरीज है? 6 डिफरेंट डिग्रीज ऑफ पेनिट्रेशन. ठीक है. Okay, let's move further and let's take up our next question, that is question number 4. A female catches fire while cooking food in her home. She sustains flame burn on her complete left upper limb, complete left lower limb, complete back and front of right upper limb. Her total body surface area involved in burns is. Now this question is not very difficult, it is fairly simple. ये क्वेश्चन आपको अर्ज कर रहा है कि आपको बर्न की क्लासिफिकेशन सिर्फ डेप्थ के हिसाब से नहीं बल्कि बॉडी सरफेस एरिया के इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से भी पता होनी चाहिए, which was given by Wallace, popularly known as rule of 9. Okay, so as per the calculation of rule of 9, a female who has been cooking in her house, she sustains burns injury. The areas are given to you. Can you calculate and tell how much of her total body surface area is involved in sustaining the burns injury? Is it 35% or 45% or 50% or 65%? Question number 4. Okay. Answers are weighted 35, 45, 50 or 65%. Waiting for our students to participate. Sushmita, Vishwas, Dan, what's your calculation as per rule of 9? Okay, so Vishwas comes up with option number A, which is 35%. So by the time you figure out the answers, I'll just draw up the scheme of calculation for you. So we are talking about rule of 9 and we have body surface area to talk about it. So okay, so this is what a rough diagram of the body looks like. Rule of 9 says that various areas of the body are 9% of the total body surface area. Head and neck is 9%. Upper limb complete is 9%. Chest is 9%. Abdomen is 9%. The front of lower limb is 9% and the back of lower limb is 9%. And similarly, when we talk about the trunk, the upper back is 9% and lower back is 9%. Okay, तो हमारे पास कितने 9 हो गए? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, then 7, 8 and 9 for the front and back of the other limb, 9, 10 and then दूसरे upper limb का 9%, 11. So we have total of 11 9s, which makes 99% body surface area
and 1% of body surface area is given to genital area. So genitalia is provided as 1% of the total body surface area. Now in the question, what has been given to us? That a female has sustained flame burns injury which involves her complete left upper limb, that will be 9%. Then her complete back, that will be 18%, because upper back will be 9 and lower back will be 9, so 18. Then left lower limb completely, that will be another 18. So this makes a total of 18 plus 18, 36 plus 9, 45% body surface area. But the last thing is given that the front of right upper limb is also involved. Now complete right upper limb is about 9%, so front will be approximately half of it, which will be 4.5%. So if you add 4.5% into 45, it will come up as 49.5%. So what is the closest option that we have to 49.5%? That is 50%. So this female has sustained 50% of total body surface area burns while she met with that accident. So इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना होता है. So Vishwas has come up with an answer which was option number A, and I hope Vishwas अभी आपने देखा होगा किस तरीके से ये ऑप्शन नंबर A नहीं ऑप्शन नंबर C है. And Sushmita has come up with option number B. So Sushmita, even you saw that although this calculation is very simple, it's not difficult, it's not tricky, but मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के क्यों रखा है, although बहुत सिंपल क्वेश्चन है, is because there are so many things which are right in front of our eyes, and we also know that we can do that, we can perform a particular activity, but if we do not practice it time and again enough, there are छोटी छोटी सी मिस्टेक्स जो हम कर सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट कैलकुलेशन. ओके, एंड सोच के देखिए, अगर एग्जामिनेशन में ये छोटी सी मिस्टेक हो जाए, विच विल बी टर्म्ड एज अ वेरी सिली काइंड ऑफ अ मिस्टेक विच मेक्स यू लूज योर 4 marks, दैट शुड नॉट बी गुड, एंड दैट इज वाई मैंने इसे प्रैक्टिस के लिए इस तरीके का क्वेश्चन रखा है, सो दैट यू पीपल हैव प्रैक्टिस. You can now do it for all by yourselves. You can think of various situations of various body parts being involved, and then try and see कि आप कितने इस तरीके के questions को practice कर सकते हैं. Once you practice 4 or 5 or let's say 10 scenarios, you will get a pretty good hang of it कि total body surface area किस तरीके से calculate करना है. Also remember that in lecture itself we talked something about rule of hand, जहाँ पर हमने बात करी थी दैट इफ व्हाट इफ जो एरिया है वो पूरा इन्वॉल्व ना हो, ओनली फ्यू पैचेस ऑफ द एरिया आर इन्वॉल्व विद द बर्न्स, देन वी कैलकुलेट विद द रूल ऑफ हैंड वेयर द palmar area of the person who has burnt this area correspond to 1% of his total body surface area. So we can correlate कि उस palmar area के corresponding कितने पैचेस हैं, that would be the टोटल बॉडी सर्फेस एरिया इन्वॉल्वमेंट इन पैचेस. तो पामर रूल ऑफ पाम या रूल ऑफ हैंड को यूज करते हैं हम जहां पर पैची बर्न्स हमें ढूंढने और या कैलकुलेट करने हो. ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 5, एंड द क्वेश्चन सेज दैट आफ्टर सस्टेनिंग 72% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया फ्लेम बर्न्स. ओके, तो यहां पर हमारे को टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न्स दिया हुआ है. द विक्टिम डाइज ऑन 3rd डे अंडर ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल. द कॉज ऑफ डेथ विल बी डॉक्यूमेंटेड एज, और द कॉज ऑफ डेथ इन दिस केस इज
The options are neurogenic shock, toxemic shock, hypovolemic shock, or septicemic shock. Okay, so what do you think will be the cause of death in a person who has sustained about 72% burns on his body and dies on the third day while under treatment in the hospital? Okay, good. So all three of you have come up with the correct answer. That is, the answer is toxemic shock. ये classification हमने उस दिन पढ़ ली थी when we were talking about lectures, that if people after sustaining burn injuries die in a recent time period, which is the first 6 hours, they usually die of neurogenic or primary shock. 6 hours to 1 day, they are dying of hypovolemic shock. That's when the hypovolemia supervenes. If the person survives the first day but dies on the second or the third day, generally he is dying of a condition called as toxemic shock, which is toxemia of toxemia of burns, and more than 4 days onwards people are dying of septicemia or septicemic shock. ठीक है, तो this was a pretty straightforward question, just to remind you कि हमने ये वाली बात करी थी, and you should be knowing this pathology that goes through the body in the first 1 week after sustaining burn injury. ठीक है, okay, let's take up question number 6, which is a dead body with burns is found in pugilistic attitude. Okay, a dead body with burns is found in pugilistic attitude. The correct statement is, options are, it's a post-mortem burn, or it's an anti-mortem burn. Option C, it could be anti-mortem or post-mortem burns, or option D, all are incorrect. The body has been found with pugilistic attitude. So यहाँ पर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में एड्रेस कर पाएँ that what is pugilistic attitude, and this term which is pugilistic attitude is something that we did not talk in our lecture, but I do keep telling you that there are certain things that we do not include in our lecture because there is limitation of space and time there, but अगर कुछ important चीज़ें होती हैं, I do include them in our MCQ session so that we can catch up with them retrospectively. Okay, so let's take up this phenomena called as pugilistic attitude. Although Sushmita has come up with answer as option number C, and Vishwas has come up with an answer of option number A. Okay, let's see what is this pugilistic attitude of body. See, when body suffers burns and the temperature is greater than 65 degrees centigrade, which flame burns do have, the muscle protein coagulates. Okay, the muscle protein coagulates, and when the muscle protein coagulates, muscles of the body goes into attitude of flexion. क्यों? क्योंकि बाय डेवलपमेंट हमारी जो फ्लेक्सर्स हैं दे आर मोर बल्कियर देन एक्सटेंसर्स. सो व्हेन द मसल प्रोटीन कोएगुलेट्स, ओके, द मसल्स विल फ्लेक्स अप, क्योंकि जो प्रोटीन्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ थी विच मेंटेन्स द टोन ऑफ द मसल्स सो दैट द मसल्स कुड बी रिलैक्स्ड एंड दस द जॉइंट्स कुड बी एक्सटेंडेड, वो प्रोसेस अब नहीं रहता. कोएगुलेशन ऑफ मसल्स विल contract the muscles, and when the muscles will be contracted, the powerful muscles will tend to contract the joint towards them,
As a result, the whole body goes into an attitude of flexion, which is called as a pugilistic attitude, because pugilist बोलते हैं बॉक्सर्स को, उनका जो एटीट्यूड होता है ना फ्लेक्शन का, जब वो स्टांस लेते हैं बॉक्सर लाइक दिस एटीट्यूड ऑफ फ्लेक्शन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज pugilistic attitude. ठीक है. नाउ pugilistic attitude develops post burns only because of coagulation of muscle proteins, which can happen if it is an antemortem burn or it can happen even if it is a postmortem burn. ठीक है. मान लीजिए एक इंसान है और वो फैक्ट्री में काम कर रहा है और उस फैक्ट्री में आग लग जाती है and unfortunately that person succumbs to burn injuries and the body keeps on burning because एक बारी फैक्ट्री में आग लग गई, there is nobody to rescue him. As a result his body muscles will flex up. तो ये तो एंटीमॉर्टम बर्न का एग्जाम्पल हुआ. ही डाइड बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हिज बॉडी कैचिंग फायर और अदरवाइज अदर कॉम्प्लिकेशंस विच वर एसोसिएटेड विद द बर्निंग बिल्डिंग. ठीक है. तो एंटीमॉर्टम डेथ में पुजिलिस्टिक एटीट्यूड मिल सकता है. अब आप दूसरी चीज सोचो, एक इंसान को पहले आपने पॉइजन देके मार दिया, नाउ यू आर जस्ट बर्निंग अप हिज बॉडी सो दैट यू कैन गेट रिड ऑफ द एविडेंस ऑफ द क्राइम. आप उसकी बॉडी को जलाना चाहते हो. हिज मसल्स आर स्टिल अंडरगोइंग हाई टेम्परेचर्स and the muscle proteins will coagulate and the body will come into pugilistic attitude. So if we do find a body in a pugilistic attitude, just by watching whether it is pugilistic, just by watching the pugilistic attitude, we cannot say whether it is definitely an antemortem or a postmortem burn. ठीक है. तो pugilistic attitude दोनों ही बर्न्स में हो सकता है. pugilistic attitude हमको ये इंफॉर्मेशन नहीं देता वेदर इट्स एन एंटीमॉर्टम और अ पोस्टमॉर्टम बर्न. इट्स ओनली बिकॉज ऑफ कोएगुलेशन ऑफ मसल प्रोटीन्स. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. द क्वेश्चन इज टू डिफरेंशिएट हीट रप्चर फ्रॉम एन एंटीमॉर्टम पेनिट्रेटिंग इंजरी. द बेस्ट ऑटोप्सी finding qualifying it as heat rupture is. Okay, question पहले समझेंगे. The question is that there is an autopsy which is going on and there seems to be some injury on the body. The body has sustained burn injuries and whatever is being seen on the body is expected to be heat rupture. Now it could be a antemortem penetrating injury also which got burnt with the burning of the body subsequently. So how do we differentiate whether it is a heat rupture which is a post-mortem phenomena? हमने अपने लेक्चर में हीट रप्चर की बात करी है, जो हमारे थर्मल इंजरीज के लेक्चर हैं. आप अगर उसकी इटियोलॉजी जानना चाहते हो, हाउ डज दे डेवलप, यू कैन गो बैक एंड वॉच. सो हाउ हम उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि ये हीट रप्चर है जो कि एक पोस्टमॉर्टम फिनोमेना है या फिर ये एक एंटीमॉर्टम पेनिट्रेटिंग इंजरी हो सकता है. ठीक है. ऑप्शंस के लिए हमारे पास में पार्टिसिपेंट्स हैं डैन एंड विश्वास, जिन दोनों ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर डी, विच इज सेगमेंटली क्लॉटेड इंटैक्ट ब्लड वेसल. इफ यू डू फाइंड दिस फाइंडिंग इन ऑटोप्सी, इट इज द बेस्ट ऑटोप्सी फाइंडिंग क्वालिफाइंग that it is a heat rupture. And great, yeah, Sushmita has also given the same answer which is very very good. क्योंकि मुझे ध्यान है जब हम ये लेक्चर कर रहे थे, I told you all the differences between heat rupture and antemortem penetrating injury, और जो भी 4-5 हमने डिफरेंस करे थे उसमें I specifically pinpointed that the best difference would be that if we can find a vessel which is intact and in that intact blood vessels, because of the constant burning of that area, the blood inside that vessel gets cooked up and so we find segmentally clotted intact blood vessel, or the blood in the vessel is clotted in segments. इधर clotted है, बीच में खाली है vessel, फिर clotted है, because the cooked up blood clumps up together at places. ठीक है. वेरी वेरी गुड. सो अगर हमें ऐसा मिलता है, दिस इज सेड टू बी यस द सिंगल बेस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग
to classify that injury as heat rupture. Okay, तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम नहीं जाते. We'll talk about you can see that description in the lecture itself. Okay, question number 8. The body tissues offering the least resistance to electric current is मसल्स, फैट, स्किन और ब्लड. ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि करंट अगर बॉडी में आता है और बॉडी के थ्रू ट्रैवल करता है, सो बॉडी के कौन से टिश्यूज बॉडी को रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं, सबसे कम कौन करता है. ओके, सो द आंसर हियर शुड बी, ओके, दिस शुड बी क्विक एंड फास्ट. ओके, व्हाट डू यू पीपल से? इज इट मसल, फैट, स्किन और ब्लड? द लीस्ट रेजिस्टेंस offered by which out of the 4? So Vishwas says it's D, blood. Anybody else? Okay, Dan also says that this is D, and the correct answer actually is D. We saw in our lecture that resistance offered by various structures of the body towards current is maximum by skin, followed by bone, followed by fat, followed by muscles, and least by blood. ठीक है, सो क्वेश्चन में लीस्ट पूछा हुआ था. लीस्ट इज बाय ब्लड. स्किन इज द टिश्यू ऑफ द बॉडी ऑफरिंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक करंट. आगे चलते हैं, विच टेक अस टू क्वेश्चन नंबर 9. द क्वेश्चन इज स्लेज हैमर इफेक्ट इज एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोक्यूशन, हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर करंट, lightning, all of them. The thing in question is sledgehammer effect. Question number 9. Is it electrocution, high voltage transformer current, lightning, or all of them? Waiting for you to answer. Okay, so Sushmita says all of them. That is option number option number AD. Sushmita has written as option number AD. I think Sushmita, you want to correct that. Is it A or D? What are we looking at? Okay, इसके डिस्क्रिप्शन पे थोड़ी सी बात करते हैं. That what exactly is sledgehammer effect? Sledgehammer effect हमें देखने को मिलता है, सबसे पहले तो मैं आपको आंसर बताऊं, लाइटनिंग में. ओके, लाइटनिंग. सो अगर हम एक लाइटनिंग को देखें which is originating in the sky amongst the clouds and is traveling towards the earth, if this lightning will come and hit a person on the ground, whatever impact the lightning will cause directly on his body will be due to the thousands of volt of current that the lightning has. तो वो तो लाइटनिंग की करंट इंजरी होगी. ठीक है, लाइटनिंग उसके सिवाय एयर प्रेशर इंजरी भी कॉज करती है बॉडी पे. कैसे? सी दिस लाइटनिंग विच इज ट्रैवलिंग फ्रॉम द स्काई टुवर्ड्स द ग्राउंड थ्रू द एटमॉस्फेयर. उस एटमॉस्फेयर में तो देयर इज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एयर प्रेजेंट. सो व्हाट हैपेंस इज एन एयर करंट which is in front of the lightning, okay, this air current while the lightning is traveling from the sky towards the ground is constantly being pushed forward. तो lightning जैसे जैसे नीचे आ रही है, this air current is getting pushed forward because of the
path of the lightning. Now this air current, which is basically a huge volume of atmospheric air, this air current which is getting compressed and pushed forward because of the lightning traveling towards the earth, is a compressed soft, क्योंकि एयर तो सॉफ्ट होती है बट खूब सारी होगी तो कंप्रेस्ड एयर फोर्स एक ब्लंट फोर्स बनेगी. ओके, सो इट्स अ सॉफ्ट बट ब्लंट फोर्स बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ एयर इज लार्ज. नाउ व्हेन दिस लाइटनिंग actually hits a person on the ground, this air current which is being constantly compressed and pushed in front of the lightning also comes and hits the person. So पहले एयर करंट हिट करेगा इंसान को और फिर लाइटनिंग भी उस इंसान के ऊपर गिर जाएगी, बिजली भी गिरेगी. तो वो जो एयर करंट हिट करता है ना, जब वो एयर करंट हिट करेगा तो क्या होगा, कंप्रेस्ड ब्लंट फोर्स इफेक्ट आएगा उसकी बॉडी पे. तो एक ब्लंट फोर्स ने बॉडी को इंपैक्ट किया है और ये जो ब्लंट फोर्स है ये ह्यूज वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर है. तो इस ब्लंट फोर्स के कारण क्या होगा, उसकी बॉडी पे कॉन्ट्यूजन्स होंगे, क्योंकि ये रफ फोर्स तो है नहीं, सॉफ्ट फोर्स है, आई सेड एयर फोर्स है. दस पीपल हु आर स्ट्रक विद लाइटनिंग ऑफन टेंड्स टू हैव बिग ब्रूजेस present on their body, particularly on the areas of neck, shoulders and back, or maybe the front of shoulders and chest, because of the injury that they sustain as the air current which was getting compressed in front of the lightning came and hit them. This injury produced by lightning is called as sledgehammer effect. Okay, sledgehammer effect. And why is it called as sledgehammer effect बताऊं? Because आपने sledgehammer देखा है कैसा होता है. Sledgehammer is basically a hammer which is big from both the sides. हम नॉर्मल घर में जब ट्रेडिशनल हैमर देखते हैं तो वो एक तरफ से छोटा एक तरफ से बड़ा होता है ना. Sledgehammer is a hammer of an iron smith, जो मोटा होता है दोनों तरफ से. So if you are going to hit someone with a sledgehammer, what kind of a bruise it will produce? It will not produce a small one, it will produce a big one. And because this huge volume of atmospheric compressed air, when it hits a person, it produces large bruises on their body. That is why that injury is compressed, that injury is taken as a sledgehammer kind of an effect being produced onto the body. ठीक है. सो स्लेज हैमर इफेक्ट को याद रखने के लिए हमें क्या याद रखना है, दैट लाइटनिंग से होता है वो, एंड इट्स नॉट अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ लाइटनिंग ऑन द बॉडी और लाइटनिंग करंट ऑन द बॉडी. इट्स एन इम्पैक्ट ऑफ कंप्रेस्ड एयर कॉज्ड बाय लाइटनिंग while it is traveling through the atmosphere towards the earth. Okay, so correct answer तो मुझे अब इसमें बताने की जरूरत नहीं है. Correct answer obviously you know now is option number C, which is lightning. और correct answer दिया है विश्वास ने भी, सुष्मिता ने भी. Okay, great. So let's move forward and take up आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 10. इट्स अ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन. एक आधी क्वेश्चन तो पिक्चर वाला होना ही चाहिए, है ना, सो दैट यू कीप ऑन गेटिंग अपडेटेड विद different kind of pictures that are available in the world of forensic medicine. So have a look at this picture. The picture is saying the features of the lesion in the photo are all except. So इस picture को देखना है, उसमें एक lesion दिखाया हुआ है and the question is asking that all the options which are given in at the bottom, उसमें से इस फोटोग्राफ में जो लीजन है उसका कैरेक्टर कौन सा नहीं है. The options are soft and pulpy. Second is caused by current. Third, it is known as jewel burns. Or fourth, the base of the lesion is non-hemorrhagic. Okay, so इसमें से कौन सा wrong option है. Look at the picture. Picture shows you some injury present on the tips of the finger. Okay, terminal
फैलिंग्स के एरिया में, टर्मिनल डिजिटल एरिया में ये छोटे छोटे से लीजन्स हैं विच यू कैन सी हेयर. Okay, these lesions. Okay, Vishwas has come up with the answer which is option number A. So I'll just give you one heads up. These lesions are called as Jules burn. Jules burns are electrical injury on the body. So when the electricity impacts the body, जो इंजरी बनाती है इलेक्ट्रिसिटी जहां पर वो बॉडी पे को इंपैक्ट करी है, दैट इंजरी इज कॉल्ड एज जूल बर्न. ठीक है. अब सबसे कॉमनली जूल बर्न कहां मिलेंगे? जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का सबसे कॉमनली इंपैक्ट करने का चांस है, विच इज ऑन दी फिंगर टिप्स, क्योंकि सबसे ज्यादा करंट लोगों को फिंगर्स में ही लगता है. और सेकेंड मोस्ट कॉमन एरिया कुड बी दी टोज, लोअर लिम्स. ठीक है. What are the characters of जूल बर्न? हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जूल बर्न कैसा होता है? लुक एट द पिक्चर. जूल बर्न्स आर basically crater shaped lesions. So if you can see, these pictures show crater shaped. Jewel burns are crater shaped lesions. They are hard to touch. They are hard to cut. So उनको टच करेंगे ना तो हार्ड होते हैं वो. उसको कट करोगे आप स्कैल्पल से, ग्रिटी फील आएगी. एंड व्हेन यू कट थ्रू इट, द बेस इज पेल. कॉमनली हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? दैट वेन एवर यू नो अ बॉडी टिश्यू सस्टेन्स ट्रॉमा, उस एरिया में अगर आप अंडरनीथ कट करके जाओगे, the subcutaneous tissue shall have some kind of inflammatory signs, at least some bleeding. So the underneath area, because of the trauma, shall not be a non-hemorrhagic spot. It shall not be a non-hemorrhagic spot. But in cases of jewel burns, the base is absolutely pale. When you cut through it, the subcutaneous tissue, the base is pale. It is a non-hemorrhagic spot. So हमने क्या देखा? Option number B is correct. Option number C is correct. Option number D is correct. Option number A, that these are soft and pulpy lesions, is an incorrect answer. Okay. और ये सुष्मिता और विश्वास दोनों ने ठीक बताया है. So remember, इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं एग्जामिनेशन में. इस पूरे क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दो, मैंने आपको नहीं बताया कि ये लीजन का नाम क्या है. सो फर्स्ट यू नीड टू वॉच द फोटोग्राफ. You need to make the diagnosis. Once you have made the diagnosis, you need to correlate the diagnosis with the question that has been asked. So after watching the photograph, you had to make the diagnosis that this is a picture of electrical injury on the fingertips. The diagnosis is jewel burns. Then the question is, the feature of the lesion in the photo are all except. So the features of jewel burns are all except. ऐसे आपके दिमाग में क्वेश्चन तैयार होना चाहिए. अब जूल बर्न्स के फीचर क्या होते हैं? इट्स अ क्रेटर शेप लीजन विच इज हार्ड टू टच, हार्ड टू कट, हैविंग अ पेल बेस. ओके. सो दिस इज द काइंड ऑफ सिनारियो जो हमें अपने दिमाग में एमसीक्यू को आंसर करते समय क्रिएट करना पड़ता है. और उसी के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें जो भी कंटेंट है उस एमसीक्यू का, उसको फॉलो करो, उसे एक बारी देख लो, उसे समझ लो. यानी कि आप लेक्चर फॉलो कर लो अपने टीचर का, आप उनकी क्लासेस में थोड़ा सा फोकस दे दो कि टीचर ज़रूर बताता है अपनी क्लास में कि जो मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ इस पे कैसा क्वेश्चन आता है. ओके. ओके जी. सो वी टेक अ ब्रेक फॉर टुनाइट नाउ. इफ यू वांट टू कनेक्ट टू मी बिफोर, बिकॉज यू वांट टू आस्क एनी क्वेरी, प्लीज डू कनेक्ट एट टेलीग्राम ऐप एट दिस लिंक livedaily.me/neetpg. ओके. एज आई टोल्ड यू लास्ट क्वेश्चन करते समय कि जब आप क्वेश्चन कर रहे होते हो किस तरीके का मेंटल सर्किट आपको तुरंत विद इन फ्यू सेकेंड्स अपने दिमाग में क्रिएट करना होता है. नाउ हाउ विल यू गेट दैट कैलिबर ऑफ क्रिएटिंग अ मेंटल सर्किट विद इन स्प्लिट ऑफ सेकेंड्स?
by preparing with Unacademy, because this is how Unacademy educators will prepare you कि आपको क्वेश्चन पढ़ के किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है अपने मेंटल फ्रेमवर्क को, so that you can answer the question effectively and correctly. और वो कैसे होने वाला है? जब आप Unacademy की सब्सक्रिप्शन लोगे और आप लाइव क्लासेस में अपने बैचेस में जाओगे, ठीक है। लाइव क्लासेस अगर आपने मिस कर दी होगी तो आप डाउट क्लियरिंग सेशंस में उस लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग देखोगे जो आपके लिए अवेलेबल रहेगी. इट्स नॉट दैट इफ यू हैव मिस्ड यू कैन नॉट गो बैक टू योर लाइव क्लासेस, यू कैन सी द रिकॉर्डिंग एंड देन डाउट क्लियरिंग सेशन में जाओगे फॉर वॉट एवर डाउट्स यू हैव. यू विल पार्टिसिपेट विद योर टीचर इन लाइव पोल्स टू गेट दैट एक्स्ट्रा एज ऑफ करेक्टली आंसरिंग द क्वेश्चन, जिस तरीके से आप मेरे साथ यूट्यूब पे इस समय लाइव कर रहे हो. होप यू अंडरस्टैंड दिस. जब इस तरीके से आप लाइव MCQ सॉल्व करते हो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस तो आता ही है इन कंपैरिजन टू दो स्टूडेंट्स, या वो स्टूडेंट जो बेसिकली पढ़ तो सब लिया है बट उसने अभी प्रैक्टिकल नहीं किया है. इट्स लाइक यू नो हाउ टू होल्ड अ बैट बट आप नेट सेशंस पे कभी गए नहीं. यू विल नॉट बी एबल टू मेक अ गुड स्ट्रोक. आपको वो अच्छा स्ट्रोक मारने के लिए नेट सेशन करना ही पड़ेगा. एंड जितना अच्छा आपने नेट सेशन किया है, the expectancy is that on the match day you could be a match winner. That's what I'm inviting you to look at. So we have live classes, live polls, test series and analysis for repeated net sessions. और ये सब देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा special classes by all the wonderful and widespread educator. एक नहीं है, बहुत सारे हैं. So you have choice कि आप किस educator को follow करना चाहते हो. ठीक है. ऑल ऑफ देम आर ब्रिलियंट. नाउ कंसिडर करो कि नेट सेशन आप कर रहे हो, एक बॉलर आपको मिला है फास्ट, एक बॉलर मिला है आपको स्पिन, एक बॉलर मिला है आपको डिफरेंट फॉर्मेट लेफ्ट आर्मर, एंड एवरीबडी इज प्रिपेयरिंग यू टू बैट वेल. वुडंट बी यू अ बेटर बैट्समैन? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. Unacademy में डिफरेंट एजुकेटर्स, ऑल ऑफ देम बीइंग सो वंडरफुल, everybody preparing you for that single day which matters in your life, that is NEET PG 2021 examination. okay, फटाफट से आप स्पेशल क्लासेस देख लो और NEET PG का सब्सक्रिप्शन ले लो. कैसे लेना है? आपको NEET PG का ऐप अपने फ़ोन पे या किसी भी हैंड हेल्ड डिवाइस जिसको आप प्रेफर करते हो उस पर आपको डाउनलोड करना है. और अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हो तो आप सीधे Unacademy के वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पर एक अपना अकाउंट बना लो, फिर आपको कोई भी डाउनलोड नहीं करना. सो वंस यू हैव ईदर डाउनलोडेड द ऐप और यू हैव क्रिएटेड द अकाउंट, देन व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू गो टू अ सेक्शन विच इज़ मैनेज गोल्स. वहाँ पर आप देखोगे देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गोल्स. UPSC है, SSC के एग्जाम है, रेलवे के एग्जाम है. आपका गोल क्या है? आपका गोल है NEET PG. So you select NEET PG. Once you have selected NEET PG, it will offer you to subscribe what is called as the plus section. So once you press this button, it will ask you to get a subscription, and you need to choose 12 months or 24 month subscription, which are bulk subscription, जो कि किसी भी स्टूडेंट के प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है. एक समय चाहिए होता है अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए एंड एजुकेटर को भी कि आपको वो प्रिपेयर करे. सो इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टू 2021 एग्जामिनेशन, टेक 12 months. इफ यू हैव टाइम इन योर हैंड, टेक 24 months. ठीक है. द कॉस्टिंग्स ऑफ दीज सब्सक्रिप्शंस आर ऑन द बोर्ड, और ये कॉस्टिंग लैंड अप करते हो आप अगर आप यूज करते हो माई रेफरल कोड विच इज Dr. Sumit Live. So once you use this referral code, then you will get a 10% discount to land up on the costings which are on the screen right now. Payment के option, you have a wonderful option of pay in parts. अगर आप part payments में करना चाहते हो, you can break it down into how you want to pay. Then you have debit card option, EMI option, UPI option. So you have variety of options to choose from. आपके लिए जो सबसे ज़्यादा सूटेबल और
इफेक्टिव ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। इस तरीके से सिंपल मेथोडोलॉजी से आप प्लस सेगमेंट सब्सक्राइब कर सकते हो अनअकैडमी का। बट इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉरवर्ड टू कवर देमसेल्व्स अप फ्रॉम द स्टार्ट, आपको पहले से ही सारी क्वेश्चनिंग चाहिए कि यार मेरे को ना सारी लाइव क्लासेस भी चाहिए, जो लास्ट में एग्ज़ाम से पहले कुछ रिवीजन कोर्सेज होंगे वो भी मेरे को बाद में अलग से ना खरीदने पड़े, मेरे को नोट्स भी सारे मिल जाएं कि जब मैं बैठा हूँ ना, व्हेन आई एम नॉट लाइव, आई एम ईटिंग और आई एम डूइंग समथिंग एल्स, तो मेरे हाथ में नोट्स हो, मैं उनको देख के रिवाइज करता रहूँ। तो आपके लिए एक बड़ा कस्टमाइज्ड सेक्शन है which is called as an iconic subscription. You can go for iconic subscription. The difference between the plus and the iconic is present in front of you. What's important in the iconic is you get prep ladder subscription along with the subscriptions which I told you get in plus. अपार्ट फ्रॉम प्रेप लैडर वीडियो लेक्चर्स हैं, क्वेश्चन बैंक 2.0 है, रैपिड रिवीजन कोर्सेज आपको मिलते रहेंगे, अलग से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ऑफ कोर्स आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कम्स एट लिटिल हायर प्रीमियम, गो चेक इट आउट, बट द गुड थिंग इज माई रेफरल कोड वर्क्स देयर टू, सो इफ यू चूज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो यूज माई रेफरल कोड टू गेट 10% डिस्काउंट। ठीक है जी, ये काम फटाफट कर लीजिए एज सून एज यू वॉच दिस। बने रहिए इस YouTube के चैनल पे, हम लोग कल शाम को फिर से मिलेंगे एंड कल हम दोबारा से अपनी नई MCQ क्लास करेंगे शाम को 7 बजे। दी टाइटल इज फोरेंसिक बैलिस्टिक्स। ओके, टिल वी मीट टुमारो 7 PM। कीप बीइंग ऑन दिस चैनल, लव दिस चैनल एज यू डू, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, शेयर दिस चैनल एज मच एज यू वांट एंड आई इनवाइट यू कि आप जितने अपने फ्रेंड्स लाना चाहते हो प्लीज डू ब्रिंग देम, लेट देम हैव these interactive advantage that we share each day amongst each other. Okay, my referral code is Dr. Sumit Life. Please do remember, share this referral code with anyone, everyone. कुछ भी वो अनअकैडमी के पोर्टल से सब्सक्राइब करना चाहते हैं उनको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, टिल टुमारो, गुड बाय, गुड नाइट, स्टे सेफ।